Hello students, welcome to Krishnas Maths. आज आम रिलेशन तो ऑलरेडी कवर कर सारी फंक्शन रो थियोरी वीडियोटा सरछि आ फंक्शन आज जो प्रॉब्लम्स अच्छी एक्सरसाइज 1 भी सेटा हम सॉल्व करिया दुईटा वीडियो रे हम कंप्लीट करिया बड़ एक्सरसाइजटा सो 1 to 10 क्वेश्चन नंबर 1 to 9 या 10 पर्यंत गोटे वीडियो करिया रिमेनिंग क्वेश्चन को हम आ गोटे वीडियो रे कवर करिया ठीक अछि। तो फंक्शन रे हम सब बेसिक कांसेप्ट पढ़ले व्हाट इज अ फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ले हमने 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू ये सब फंक्शन हम पढ़ले तापर हम पढ़ले कंपोजिट फंक्शंस तापर हम पढ़ले प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस तापर हम लास्ट वीडियो रे पढ़ले व्हाट इज ए व्हेन द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट एंड हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एतिके हम पढ़ी सारछे अभी के तो क्वेश्चन कर हां नाउ आ जदी मो चैनल रे नुआ अछंदी दैट इज माय चैनल कृष्णास मैथ्स जदी मो चैनल रे नुआ अछंदी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे सब्सक्राइब एति पय करिवे ताकि मते मोटिवेशन मिले आपन पय और भलो भलो वीडियो नै के आसीबी लाइक और शेयर सब वीडियो रे करिवे ताकि आपन संग माने मध्ये उपकृत होबे राइट या बहुत शेयर करिवे वीडियो रो so that it will reach each and every corner of Odisha. Keep supporting me so that I will make good videos and good content for you people. चल बढ़िया और स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन ना एक्सरसाइज 1b कोन कहछि देखिए let x is equal to x comma y x कोटा सेट होछि सेतिर दुटी एलिमेंट y u v write down all the functions that can be defined from x to y x रो y को जेति फंक्शन डिफाइंड हे परियो सब गुडा हम लिखबा how many of these ए भितरु केतटा 1 1 केतटा on to केतटा 1 1 on to ठीक अछि दिस इज व्हाट द क्वेश्चन चलो स्टार्ट करिया क्वेश्चन कोन होछि गिवन कोन देछि x is equal to x comma y x is equal to x comma y and y is equal to u comma v x रे दुटी एलिमेंट अछि x y y रे u v now the functions are f1 equal to x u y v this is one type of function empty गोटे फंक्शन हे परियो then f2 जो हबो x v and y u x रो v को y रो u empty हे पारे then f3 is x related to u xu and y also related to u yu and f4 let it be x related to v xv and yv तो एमती चारिटा फंक्शन है अभी मत कहंतु व्हाट आर द टाइप ऑफ फंक्शंस जदि फर्स्ट फंक्शन प्रथम फंक्शन कथा कहबे देखो प्रथम फंक्शन एमती अछि ना दिस इज x एमती अछि दिस इज x y u v x related to u y related to v माने this is 1 1 this is 1 1 now x related to v next one जदि कहबे this is x this is y this is xy and this is u v तो y related to u x related to v this is again 1 1 this is again 1 1 and on to also it on to मतलब y रा सब एलिमेंट रो कोई ना कोई प्री इमेज अछि 1 1 and on to now third wala this is x this is y this is x y and this is u तो many one function not 1 1 माने many one this is also many one x v y v this is also many one तो how many 1 1 functions माने 1 1 function दुईटा two 1 1 functions second wala on to function that is again to 1 1 on to that is those are also to 1 1 on to माने ए दुईटा 1 1 और on to ठीक अछि काहे कि ए ना एथि on to होबनी काहे ना v जो एलिमेंट अछि v एलिमेंट पई को प्री इमेज एथि नाही there is no pre image for v in third and fourth a third रे u पई प्री इमेज अछि किंतु v पई नाही fourth रे v पई प्री इमेज अछि किंतु u पई नाही those are the reasons why these two are not on to function ठीक अछि तो केतरा 1 1 आसला दुईटी how many 1 1 functions 2 how many on to functions 2 and how many 1 1 on to functions they are also 2 बुझ गेल जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन question number 2 let x and y be sets containing m and n elements respectively what is the total number of functions from x to y so total number of function कते गेला total number of functions from x
to y. देखो x रे केतटा एलिमेंट अछंती, व्हाट इज द टोटल? x contains m number of element, x रे अछंती तो n of x is equal to m and n of y is equal to n. This is given. n of x केते अछि? n of x अछि m, n of y अछि n. जदि n of x मतलब x रे जदि m number of element रहिला, y रे जदि n number of element रहिला, total number of functions will be n raised to m, n raised to m. Second question देखो, एटा होची total number of functions, n रो पावर m यार पावर m, काई ना यार प्रति एलिमेंट पाई आम पाखर m ऑप्शन रहिला, y रो each एलिमेंट पाई आम पाखर m ऑप्शन रहिला. तो y रो प्रथम एलिमेंट पाई m नंबर ऑफ ऑप्शंस, सेकंड एलिमेंट पाई m नंबर ऑफ ऑप्शंस, थर्ड एलिमेंट पाई m नंबर ऑफ ऑप्शंस, फोर्थ एलिमेंट पाई m नंबर ऑफ ऑप्शंस और लास्ट n नंबर ऑफ एलिमेंट पाई मतलब m नंबर ऑफ ऑप्शंस. तो m into m into m into m how many times? m number of times, so n raised to n. Okay, then how many functions from x to y are 1 1 according to m less than m? If m is less than m, m equal to m रे कोन हो देखो, m equal to m, and m greater than m, m less than m. What is m? m मतलब n of x is equal to m and n of y equal to n. This is given to you. If m is less than n माने x रो जो नंबर ऑफ एलिमेंट जदि y रो एलिमेंट रो कम हेगला, यार को एलिमेंट सहित ये रिलेशन करिवो, काई ना m लेस देन m ना, y रे अधिका एलिमेंट रो जो m रे कम एलिमेंट रो जो हमहु सिलेक्ट करियो पड़ो, m जो नंबर ऑफ x रो जो m नंबर ऑफ एलिमेंट अछि से y रो को एलिमेंट सहित रिलेशन करिवो, तो हमको सिलेक्ट करियो पड़ो, and the number of ways will be n p m. एठी n कोन हेगला, n अधिका हेगला तो n p m number of which are 1 1, which are 1 1 when m less than n. यदि m रो वैल्यू लेस देन m हेगला तो आंसर कोन हेगला n p m. जदि m रो वैल्यू ग्रेटर देन n हेगला, जदि m रे x रे नंबर ऑफ एलिमेंट अधिका हेगला, x रे नंबर ऑफ एलिमेंट अधिका हेगला, केतरा एलिमेंट x रे एम्ति रहि जइवो जार किछि इमेज रहिवो नै b रे, देयर विल बी नो इमेज, कोथि रहिवो नै, नंबर ऑफ 1 1 काई ना से फंक्शन खुद 1 1 होबो नै, number of 1 1 functions equal to 0. m equal to n हेगला, if it is m equal to n, this is when m greater than n, है ना. when m equal to n, x रो प्रति एलिमेंट पाई गोटे गोटे हो, फर्स्ट एलिमेंट पाई m नंबर ऑफ वेज, सेकंड एलिमेंट पाई m minus 1 नंबर ऑफ वेज, थर्ड एलिमेंट पाई m minus 2 नंबर ऑफ वेज, माने जोटा हे जो सेटा करिवन. तो नंबर ऑफ वेज के गेला, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू m फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू m फैक्टोरियल, बुझले. तो m लेस देन n हेले np m, m greater than m हेले number of 1 1 functions will be 0, otherwise it is m factorial when both are equal. बुझियो, this is your second question. Now come to third question. कोन कहू छै थर्ड क्वेश्चन गोटे थर देखि दियो. थर्ड क्वेश्चन कहू छै examine each of the following functions if it is injective, injective माने 1 1, मन रखो, injective माने 1 1, surjective माने on to, bijective माने both, bijective माने both in 1 1 as well as on to, none of the three also. एटा हम देखियो. एट कोन अछि गोटे फंक्शन डिफाइंड इज f from r to r and f of x equal to x square. Let 1 1 check करछ हम, let x1 comma x2 both belongs to r. Consider f of x1 is equal to f of x2. एमती हमें कंसीडर कर ले. तो f of x1 कौन हेगला, f of x1 is x1 square and this is equal to x2 square. तो x1 square minus x2 square is not equal to 0, is equal to 0. a square minus b square हेगला, तो x1 plus x2 into x1 minus x2, this is equal to 0, equal to 0. ठीक अछि. So x1 plus x2 को जदि हमें 0 करिवा, then x1 is equal to minus x2, and जदि हमें x1 equal to x2 कहिवा तो x1 equal to plus x1
and x1 equal to minus x2 माने x1 जो एलिमेंट अच्छी यार दीटा इमेज है गला x1 as x2 and minus x2 बुझिला ना x2 and minus x2 so it is not 1 1 ये 1 1 no right now on to check करिया on to केमती चेक करिया each element y पाए तो जदि 1 1 हलानी तो बाइजेक्टिव होबनी not बाइजेक्टिव अबे देखिबा सर्जेक्टिव होबो कि नहीं माने 1 2 होबो कि नहीं जदि हमें रेंज रे कोई भी एलिमेंट नेबा तारो प्री इमेज जदि कोई भी एलिमेंट नेबा प्री इमेज और कोडोमेन इक्वल टू रेंज एमती भी हेले चलिबो तो यार रेंज कोन देखो यार रेंज हेगला r गिवन range of f is equal to r now we'll find codomain क्या थेगला फंक्शन f of x equal to x square तो यार जो रेंज आसीबो यार रेंज आसीबो नै कि कोडोमेन तो दिया हिचे ना रेंज यार आसीबो रेंज इज पॉजिटिव 0 and 0 to infinity including 0 माने पॉजिटिव रियल नंबर्स काइन f of x स्क्वायर हे जाबो ना जदि पॉजिटिव नंबर दबो आउटपुट पॉजिटिव आसीबो नेगेटिव नंबर देले आउटपुट पॉजिटिव आसीबो 0 देले भी आउटपुट पॉजिटिव आसीबो राइट तो and codomain is given as r so these are not equal since range is not equal to codomain therefore not onto that is surjective this is not surjective so this is not 1 1 and not onto also okay. Question number 2 what is the f is a function from -1 to 1 and f of x equal to sin x look given f of x equal to sin x f of x is sin x now एट देखो f of 0 कौन हेगला sin 0 माने 0 f of pi कौन हेगला f of pi equal to sin pi that is also equal to 0 तो f of 0 is equal to f of pi but 0 is not equal to pi therefore f is not 1 1 f is not 1 1 होबनी माने not injective not इंजेक्टर नाउ एबे देखो रेंज रे को एलिमेंट अछि देखो -1 to 1 रेंज कोन अछि -1 to 1 -1 to 1 भीतर जो भी एलिमेंट नबो तार करस्पोंडिंग x मिलियो तार करस्पोंडिंग देयर विल बी 1x ऑलवेज सो इट्स ऑन टू सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन तो देखो एटा दैछि कोडोमेन और sin x रेंज मध्ये -1 to 1 हां range equal to codomain so on to तो इंजेक्टिव नहीं तो सर्जेक्टिव it is surjective therefore not bijective पे दुईटा देखा पड़े 1 1 as well as on to not bijective बुझिगला let us move to third question देखो कौन देछि क्वेश्चन तो देछि कि f of x f is a function of r plus to r plus माने पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर and f of x equal to x plus 1 by x let x1 equal to 2 and x2 is equal to 1 by 2 so what about f of x1 equal to 2 plus 1 by 2 माने 5 by 2 now f of x2 माने 1 by 2 so this is 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 so this is equal to 1 by 2 plus 2 which is equal to 5 by 2 so since f of x1 both 5 by 2 na equal to f of x2 but is x1 equal to x2 no but 2 is not equal to 1 by 2 that is x1 not equal to x2 so it is not 1 1 therefore f is not 1 1 now about onto माने सर्जेक्टिव चेक करिया सर्जेक्टिव कोन चेक करिया
फॉर एवरी एलिमेंट इन r प्लस रे जेकोनस एलिमेंट नेबा हमको रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर ही आसीबो फॉर x ग्रेटर देन 0 जदि हम x ग्रेटर देन 0 र वैल्यू नोचे r प्लस माने पॉजिटिव रियल नंबर्स सेठी भी पॉजिटिव रियल नंबर आसीबो पड़िबो है रेंज ऑफ कोडोमेन कोन अछि देखो जदि मो एठी 1 नेली y को जदि 1 नेली इफ f of x is equal to 1 तो x plus 1 upon x is equal to 1 या को सॉल्व करिए अगर x plus 1 सो x square plus 1 सिंप्लीफाई करछि इक्वल टू x को एई पटे आनले x square minus x plus 1 equal to 0 या को सॉल्व करले x equal to minus b quadratic equation plus or minus square root of b square minus 4 into 1 divided by 2 into 1 so this is equal to 1 plus minus root 3 minus root 3 divided by 2 which is equal to 1 plus minus root 3 iota divided by 2 root 3 iota by 2 so this is not does not belongs to r plus ये r plus को belong करना therefore f is not onto f is not onto तो f onto हला नहीं 1 1 भी है नहीं ना नहीं 1 1 भी है नहीं onto भी है नहीं माने हम कौन करिया not injective and not bijective not surjective not injective and not surjective next देखो f is a function from r to r plus f is a function from r to r plus let us check whether f is injective or not so let us consider हमें कौन consider करिया for all x1 comma x2 belongs to r let us consider f of x1 equal to f of x2 let us consider like this so this is x1 का cube plus 1 equal to x2 का cube plus 1 1 1 cancel हो so x1 का cube is equal to x2 का cube which implies x1 equal to x2 therefore f is 1 1 f is injective 1 1 or injective now we'll check whether it is surjective or not so f of x को y नहीं दिया let us consider f of x equal to y तो y x cube plus 1 equal to y तो x is equal to y minus 1 whole raised to 1 by 3 now f of x is equal to x cube which is y minus x raised to 1 by 3 the whole cube plus 1 so 3 gets cancelled it is y minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 gets cancelled f of x equal to y therefore it is for f is onto so surjective therefore f is bijective injective वाला surjective वाला therefore bijective okay चल एबे देखिबा e fifth problem f गोटे फंक्शन अछि which is defined from 1 minus 1 to r plus 1 minus 1 अछि से थ्रू r plus को डिफाइन है तो f of x equal to consider कर दियो for if f of x is equal to f of x2 let us consider like this so f of x1 is x1 divided by 1 minus x1 square equal to x2 divided by 1 minus x2 square cross multiply कर दियो x1 into 1 minus x2 square equal to x2 into 1 minus x1 square multiply करियो x1 minus x1 into x2 square equal to x2 minus x1 square into x2 ठीक है so this is x1 minus x2 equal to x1 square x2 square minus x1 x2 square x1 into x2 square minus x1 square into x2 so this is equal to minus x1 x2 common नहीं जाओ तो कौन मिला x1 minus x2 and this is also x1 minus x2 so this is x1 minus x2 को जतले common नेबे एठी मिला 1 plus x1 x2 and this is equal to 0 तो either x1 minus x2 equal to 0 or 1 plus x1 into x2 equal to 0 now this cannot be एटा केबे 0 हबन काई ना एटा 0 हेबा पय x1 into x2 रो वैल्यू -1 हेबार अछि आ x1 into x2 रो वैल्यू केबे -1 हबो when x1 is 1 x2 is -1 x1 1 हबो और x2 -1 हबो or
x1 minus 1 habo और x2 1 habo eta possible nahi. Why? Because 1 and minus 1 both are not there in the domain रे ना 1 अछि ना minus 1 अछि काहे ना open interval अछि कोन अछि काहे ना open interval अछि काहे ना open interval अछि. So this cannot be equal to 0. Therefore x1 minus x2 is equal to 0. So x1 is equal to x2. x1 equal to x2. Therefore f is 1 1. Therefore 1 1. Since 1 plus x1 x2 cannot be equal to 0. Now on to 1 1 और इंजेक्टिव on to check करियो. On to check करियो let us consider y is equal to x divided by 1 minus x square. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते y minus x square y is equal to x. So this is x square y plus x minus y and this is equal to 0. Is a quadratic equation in x. Therefore x is equal to minus b plus or minus b square means 1 minus 4ac 4 into a into c is minus y divided by 2y. So this is equal to minus 1 plus or minus square root of 1 plus 4y square divided by 2y. Now since range is r plus जेतला हम y टाको 0 कर दवा जेतला हम y टाको 0 कर दवा जो x आसीबो x टा नॉट डिफाइंड हेजो अनडिफाइंड हेजो. सो x टा r को बिलोंग करिवो नै. देयरफॉर इट इज नॉट onto. सो नॉट बाइजेक्टिव. 1 1 अछि किंतु onto नै तो बाइजेक्टिव होबो. ठीक अछि. नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो हमें 11th स्टैंडर्ड रे पढ़िथिले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना r to r plus सब बोल इंटीजर रिटर्न करियो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x. नाउ f of दुटा वैल्यू नेबा f of 1.1 is equal to greatest integer of 1.1 और integer of 1.1 is 1 and f of 1.5 is equal to greatest integer of 1.5 and that is also equal to 1. So since f of 1.1 is same as f of 1.5 but 1.1 is not equal to 1.5, therefore it is not 1 1 or injective. Now range is equal to integer. A function range कौन आसियो सब बोल integer आसियो किंतु range कौन देछि r plus since range is not equal to codomain. Range is not equal to codomain, therefore it is not kind of onto function पाई range of codomain equal होगा दरकार. एठी सिर्फ integer आछि आ एठी positive real number आछि. So positive real number आउ integer भितर integer is a subset of positive real numbers. हां गोटे पार्टी positive integer positive real number भितर रहयो किंतु positive real number आउ integer दुटा जाक equal न हो. Those two sets are not equal, therefore onto होबनी माने not bisective. ठीक अछि. f हेगला g देखो f of x equal to mod x for 1 1 f of 1 equal to mod of 1 f of x mod x अछि तो 1 हेगला. Similarly f of minus 1 equal to mod of minus 1 that is also equal to 1. So since f of 1 equal to f of minus 1 but 1 is not equal to minus 1, therefore not onto, not 1 1, that is not injective. Now range is equal to mod x range कौन होगा 0 to infinity. Mod x range होगा 0 to infinity but range is given as r plus which is a subset of r plus therefore subset of r, therefore not onto, so not bijective. Subjective नहीं, not bijective. F of x equal to signum of x, so signum of 1 is 1, so f of 3 13 is 1, so f of 1
equal to f of 13 सब पॉजिटिव वैल्यू पे 1 रिटर्न करियो तो 1 is not equal to 13 तो f is not 1 1 on to is r plus range of this function is range is equal to -1 0 and 1 which is subset of r not equal to r but it's a subset of r therefore f is not onto. Next I f is a function from r to r and f is equal to identity in real numbers. The identity function in real numbers given f of x is an identity function. f of x is identity function that is जदि identity function हबो f of x equal to x तो f of x1 is equal to x1 हबो f of x2 equal to x2 हबो. So therefore since f of x equal to f of x1 जदि हम एमती कंसीडर करछे then this will be equal to x1 equal to x2 so f is onto. Now range is equal to r therefore range f is onto तो 1 1 हेगला onto हेगला माने बाइजेक्टिव हेगला therefore f is bijective. चलो देखो पिले एबे हम करिबा क्वेश्चन नंबर 4 so that the following functions are injective. Injective माने कोन होची injective माने होची 1 1 injective is 1 1 1 1 माने what do you mean by that? Distinct elements have distinct images तो distinct element रो जदि distinct image रहिबो तो देखो फंक्शन कोन दिया है फंक्शन गिवन अछि sin x 0 to pi by 2 भीतर देखो जदि sin x टिके अलर बुझो चेष्टा करियो 0 to pi by 2 sin x ग्राफ होचे साइनसोइडल ग्राफ होचे एटी pi by 2 एटी हला pi by 2 ये हेगला 0 ये हेगला pi राइट 0 to pi भीतर sin x कोन होचे पॉजिटिव होची सब बोले पॉजिटिव होची ये कहूची 0 to pi by 2 0 to pi by 2 भीतर x रो जो भी वैल्यू नबो तार यूनिक y रो वैल्यू आसो for each value of x there will be unique values of y ठीक अछि किंतु जदि ग्राफ टा आउट के एक्सटेंड कर दो जदि एक्सटेंड कर दो देखो pi by 2 रो वैल्यू केते आसिला 1 आसिला है ना एटी भी वैल्यू 1 आसियो किंतु केते बेला हो सेटा एटा तो 2 pi हेगला एटा 2 pi plus pi by 2 माने 5 pi by 2 5 pi by 2 रे पूरी वैल्यू रिपीट हेगला माने 81 1 हबने किंतु से 0 to pi by 2 को है ना between 0 to pi by 2 sin x रो repeated value occur करियो नाही sin x does not occur any repeated value therefore a function will be 1 1 let x1 comma x2 belongs to 0 to pi by 2 जो इंटरवल हमको दिया है वो इंटरवल दिया है 0 to pi by 2 तो f of x1 suppose equal to f of x2 let us consider like this f of x1 माने sin x1 equal to sin of x2 therefore x1 is equal to x2 since x belongs to 0 to pi by 2 0 to pi by 2 अछि सेहित में रिपीट करियो नथले तो sin रो वैल्यू बहुत जगह रिपीट करियो ना देखो जदि 180 पर्यंत भी गला टिल पाई पर्यंत sin 30 केते होची 1 by 2 sin 150 केते गेला 1 by 2 तो 30 1 by 2 150 मध्ये 1 by 2 तो दुईटा वैल्यू रो गोटे इमेज आसला माने 1 1 हबन किंतु दैट इज व्हेन द इंटरवल फ्रॉम 0 to 180 किंतु जदि 0 to 90 भीतर अछि को कोनो से वैल्यू रिपीट करियो नाही तो f is 1 1 f is injective or 1 1 ठीक अछि now f of x equal to cos x even cos x रो मध्ये जदि ग्राफ ता तमे देखियो 0 to pi पर्यंत फाइल ड्रा करछि ठीक अछि तो cos 0 हेगला 1 एटा हेगला cos रो pi by 2 cos pi by 2 0 और cos pi हेगला -1 देखो एठू आसला एम्प्टी आसलो ग्राफ ता ठीक अछि द ग्राफ विल बी लाइक दिस सो pi रे हेगला तार -1 वैल्यू हेगला और 0 रे हेगला +1 ए देखो ए भीतर बिटवीन 0 to pi
cos x तार को भी वैल्यू रिपीट करिवो नाही, दैट्स व्हाई f of x is 1 1. So let x1 comma x2 belongs to the interval 0 to pi. x1 comma x2 कौन निकले 0 to pi, and f of x1 is equal to f of x2, which is cos of x1 is equal to cos of x2, and that implies x1 is equal to x2. So f of x is injective. F of x is equal to cos x is injective in the interval 0 to pi. बुझीगला बढ़िया आगु फर्स्ट सेकंड है नाउ थर्ड f of x equal to log x. f of x कौन होची बोले log x होची. log x रो जदी ग्राफ देखियो इंटरेस्टिंग ग्राफ का for a greater than 0 a not equal to 1 the graph of log x look like this. log 0 कौन होची not defined, तो ग्राफ ऑफ log x एटा कौन होची log 1 हेगला 0 तो 1 रे ये 0 हो नहले एमती बड़ी बड़ी चलियो सेत पय तारो डोमेन होची 0 टू इंफिनिटी. 0 ऊपर को जदी नबो x रो वैल्यू जदी 0 टू आगु को नबो log रो को भी वैल्यू रिपीट करिवो नाही है ना. सो लेट x1 comma x2 belongs to the interval 0 to infinity. Let us consider f of x1 is equal to f of x2, which is log of x1 to the base a is equal to log of x2 to the base a, that is log of x1 to the base a minus log of x2 to the base a. एटा लेफ्ट साइड बंदली तो log m minus log n गोटे प्रॉपर्टी को मन रखो log रो प्रॉपर्टी 11th स्टैंडर्ड रे पढ़े दिलो ना log m into n equal to log m plus log n. log m plus log n, and the log of m divided by n equal to log m minus log n. log m minus log n, and the log of m raised to n equal to n into log m, and the log 1 is equal to 0. log of e to the base e is equal to 1. These are the basic concepts of logarithms with the graph. Here the domain कौन होची? What is the domain of log x? Domain of log x is 0 to infinity. 0 not included. 0 to infinity will be the domain. तार range होची minus infinity to plus. Range देखो 80 minus infinity, 80 plus infinity. So range will be the set of real numbers. This is all about log function. आछि आमे हम क्वेश्चन को आछि क्वेश्चन रे कोन थिला आमे करथिले log of x1 हा तो log m minus log n will be equal to log of m by n. log x1 upon x2 equal to 0. So 80 प्लस है तो x1 upon x2 equal to log तारा साइड चेंज करबो जेतले log तारा साइड चेंज करबो मन रख e raised to 0. log of e होची एंटी फंक्शंस. log of e कोन होता एंटी फंक्शन तो जेतले log साइड चेंज करबो तो एक्सपोनेंशियल हो अब एक्सपोनेंशियल साइड चेंज करले log हो सेट पे log of exponential is always 1 ना. log of exponential is always 1. जोदी गोटे फंक्शन को आ गोटे फंक्शन रे अप्लाई कला पर से 1 होची से दुईटा कोन हेतबे एंटी फंक्शन से सेतेबेले 1 हो तो e raised to 0 कते हेगला फिले e raised to 0 हेगला 1. therefore x1 equal to x2, so f of x is 1 1 or injective. 1 1 or injective. ठीक है. now f of x equal to a raised to x. f of x equal to a raised to x. a greater than 0 but a should not be equal to 1. now let us consider let f of x1 equal to f of x2. So this is a raised to x1 equal to a raised to x2. Correct? So a raised to x1 divided by a raised to x2 divided by a raised to x2 will be equal to 1. a raised to x2 will be equal to 1. now a raised to x1 minus x2 power ऊपर जो कौन minus 1 को हमें लिख देगा a raised to 0. so this is x1 minus x2 equal to 0. therefore x1 equal to x2. बुझिगला पिला x1 कौन हेगला x2 सहित इक्वल हेगला तो x1 equal to x2 हेगला माने therefore f is
1 1 or injective बुझला चलो आगे बढ़िया so that the function f and g are defined by f of x equal to 2 log x and g of x equal to log of x square are not equal even though log of x square equal to 2 log x देखो तो log रो गोटे प्रॉपर्टी अछि log of m raised to n होछि n log m कोन होछि n log m एबे कोन कोछि देखो क्वेश्चन हम कोन कोछि log x square equal to जदि प्रॉपर्टी अप्लाई करले 2 log x होछि ए दुटा फंक्शन इक्वल देखो किंतु से कोछि f of x 2 log x and g of x equal to log x square माने ए दुटा फंक्शन इक्वल हेबा कथा किंतु फंक्शन रे कांसेप्ट कोन कोछि टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल हां टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल या पे तीनटी कंडीशन अछि हां कंडीशन केते अछि थ्री कंडीशंस प्रथम कंडीशन डोमेन ऑफ f हां डोमेन ऑफ f will be equal to domain of g प्रथम range of f must be equal to range of g range of f is equal to range of g and f of x1 is equal to g of x1 for all x1 belongs to the domain for all x1 belongs to the common domain तो जदि डोमेन दुईटा जो फंक्शन रो डोमेन इक्वल हला दुईटा जो फंक्शन रो रेंज इक्वल हला और दुईटा जो फंक्शन को गोटे पर्टिकुलर वैल्यू हम नेबा इंटरवल भीतर जोटा कॉमन डोमेन टा जोटा कॉमन डोमेन भीतर गोटे पर्टिकुलर वैल्यू नेले से वैल्यू रे एट दैट वैल्यू the value of f of x and the value of g of x must be equal से कॉमन वैल्यू रे फंक्शन रो वैल्यू f of x रो वैल्यू और g of x रो वैल्यू दुईटा जो वैल्यू इक्वल हेबा पड़ियो देन ओनली द टू फंक्शंस आर इक्वल हां तो आमे देखियो पड़ियो ये जो f of x अछि और g of x अछि यार डोमेन रेंज ये सब इक्वल की यदि कोटा गोटे इक्वल न हला तो आमे लिखि दी परियो आ आगु को हमकु चेक करियो दरकार फॉर एग्जांपल जेंति मु कहली टू फंक्शंस are said to be equal if domain of f is equal to domain of g, range of f is equal to range of g, and f of x1 must be equal to g of x1 for all x1 belongs to the domain common domain एटा होचे तमन कांसेप्ट हा नाउ डोमेन ऑफ f कोन 2 log x f हम कोन दिया 2 log x log x रो डोमेन कोन ग्रेटर देन g माने 0 to infinity नाउ डोमेन ऑफ g कोन log of x square देखो log of x square तो a वैल्यू पॉजिटिव हेबार अछि a वैल्यू जदि ग्रेटर देन 0 होबो a वैल्यू जदि ग्रेटर देन 0 हेबार अछि तो x नॉट इक्वल टू 0 x तो 0 होबन आउ कोन होबो पॉजिटिव भी हे पार नेगेटिव भी हे पार पॉजिटिव नेगेटिव दो दुटा काहे ना पॉजिटिव वैल्यू लेले x स्क्वायर पॉजिटिव हे गेला x को नेगेटिव नेले x स्क्वायर पॉजिटिव हे जाउती फॉर देखो x पॉजिटिव देन आल्सो x स्क्वायर पॉजिटिव जदी x नेगेटिव मत हला देन आल्सो x स्क्वायर पॉजिटिव होता तो वी कैन टेक बोथ पॉजिटिव वैल्यूज एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू बट वी कैन नॉट टेक 0 काहे कि log x रो 0 आसीबो है ना तो r प्लस r not r plus r होबो सब रियल नंबर हे पारियो किंतु 0 होबनी राइट तो 0 होबनी माने जो सिंगलटन सेट 0 सेटा को माइनस कर दो नाउ सिंस डोमेन ऑफ f is not equal to domain of g therefore f of x and g of x are not equal functions इक्वल फंक्शन बुझले ये सब तमरो बेसिक नॉलेज पे लिखली और जो व्हाइट कलर लिख सेटा तमरो सॉल्यूशन हो राइट और से एमटी भी लिख फेरो सेठी तमो गिवन कोन f of x लिख दियो f of x is 2 times log x and g of x is log of x square ठीक अछि एमटी लिखो तापर डोमेन रे डिस्कस कर ठीक अछि चलो आगु दिबा Give an example of a function which is surjective but not injective. Surjective हो माने y रो सब वैल्यू पे x रे गोटे गोटे वैल्यू रहयो किंतु इंजेक्टिव होबनी माने डिस्टिंक्ट एलिमेंट और डिस्टिंक्ट इमेज रहबन एग्जांपल sin x एग्जांपल कोन हेगला sin x
First, f of x is equal to sin x. Sin x देखो, sin x रे x रो अलग अलग वैल्यू नहीं, सब वेल अलग अलग वैल्यू आसीबो कि आसीबोनी. Why? Because f of 0 equal to 0 and f of pi is also equal to 0. f of 0 माने sin 0, sin 0 0, sin pi 0. तो f of 0 equal to कौन हेगला? f of 0 equal to f of pi हेगला. But 0 is not equal to pi. माने not injective but surjective. But subjective कहीं कुछ नहीं, subjective एच पे कुछ जे जदि कोई भी वैल्यू ना रियल नंबर भीतर जे कौन सी वैल्यू न x तापे तार करस्पोंडिंग y रहू. सो फॉर ईच y देयर विल बी अ करस्पोंडिंग x, देयरफॉर सर्जेक्टिव होबो किंतु इंजेक्टिव होबो. हां, सेकंड एग्जांपल देखो, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव. इंजेक्टिव होबो किंतु सर्जेक्टिव होबो. गुड पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं, f of x is equal to x by 3 है ना, फ्रॉम z इंटीजर टू रियल नंबर, इंटीजर टू रियल नंबर. ठीक अछि. तो x होछि तमर इंटीजर, x होछि तमर इंटीजर. तो f of x1 इक्वल टू f of x2 जदि करबो तो एटा हेगला x1 upon 3 is equal to x2 upon 3, 3 कैंसिल हेगला, therefore x1 equal to x2. ओके, तो f is injective, f is injective, injective हेगला. अब रियल नंबर ना इंटीजर आसीबा पड़ियो. y रे जदि गोटे रियल नंबर कंसीडर करलो तो हमको x रे इंटीजर आसीबार अछि सब बेले, है ना. तो एठी जदि x को हमें रियल नंबर नेबा, हां, जदि 2 नेले तो 2/3 इंटीजर आसीबो कि 3 नेले इंटीजर आसीबो, 6 नेले इंटीजर आसीबो. 3/3 1 इंटीजर, 6/3 2 इंटीजर, -3/3 इंटीजर. किंतु जदि मु 2 नेले x जगह रे f of 2 equal to 2/3 which does not belongs to z. माने जदि मु y रे 2 नउची तो 2/3 इंटीजर हेबा कथा किंतु 2/3 नॉट एन इंटीजर, therefore f is not surjective माने on to हेगला. देन थर्ड वाला खाली एग्जांपल लिखियो, गोटो डिस्कस करियो. f of x equal to x divided by 1 minus x square from -1, 1, this is the domain, to r. -1, 1 to r. -1, 1 काहे लिखि बुझियो, काहे ना डिनोमिनेटर ता -1 रे भी 0 ही जाउची आ +1 रे भी 0 हो. तो -1, 1 एटा ना इंजेक्टिव होबो ना सर्जेक्टिव होबो. इंजेक्टिव काहे के होबो ने देखो, -1 रे भी ये कोन हेगला इन्फिनिटी हेगला, +1 रे भी इन्फिनिटी हेगला, -1 रे भी इन्फिनिटी, +1 रे भी इन्फिनिटी. तो नॉट इंजेक्टिव. ये क्वेश्चन हम आगुर करथिले से एग्जांपल में डायरेक्ट नहीं जाय छ, एंड इवन नॉट सर्जेक्टिव आल्सो, नॉट सर्जेक्टिव. या को y इक्वल टू f of x करके जदि नबो तो x को y रो फॉर्म रे एक्सप्रेस करियो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आफते सारो डिनोमिनेटर y रो जो है ना. तो y जतले 0 हो जो ना तापे कोई इमेज हमको मिलिबो ना, दैट्स व्हाई नॉट सर्जेक्टिव. देन फोर्थ वन इज बाइजेक्टिव. फोर्थ वन इज बाइजेक्टिव. मैपिंग रो मते देख पारी. फोर्थ वन इज बाइजेक्टिव. f of x equal to x cube plus 1 and function is from r to r. This is only bijective. Only bijective माने इंजेक्टिव as well as surjective. इंजेक्टिव भी होबो और सर्जेक्टिव भी होबो. एडा में आगुरु देखथिले एग्जांपल. ठीक अछि. 7th क्वेश्चन देखो, prove that the following sets are equivalent. So let us consider this set is A, let this set will be B, this set equal to C and this set equal to D. We need to prove that these two are equivalent. Two sets are said to be equivalent. Data set, data function आमे equivalent set केते बेले कहबे, जेते बेले we can establish a one-to-one correspondence. If we can establish a one-to-one correspondence
between the sets, then they are equivalent. Then they are equivalent. If we can establish a one-to-one correspondence between the sets, then they are equivalent. One-to-one correspondence जो हम establish करी पहले, then equation कौन है? EQ, set equivalent है. देखो, अभी A और B, A गोटा set होची, B गोटा set होची. जब B हम लिखिया, B equal to Y such that B equal to X, Y such that Y is equal to 2X, Y equal to 2X. And x कौन 1 2 3 4 5 6 एमती नेचुरल नंबर अच्छे. तो देखो y equal each y is obtained when you multiply x by a, x by 2. देखो ए जो एलिमेंट गुड़ा को a रे अच्छे से माने को 2 रे मल्टीप्लाई कर देने सब b रो एलिमेंट हमें ऑब्टेन कर पारछे. We can obtain b by multiplying the elements of a by 2. तो there is a correspondence between a and b. There is a 1-1 correspondence between a and b. एमती रिलेशन आम गोटे एस्टाब्लिश कर दे पारले, व्हिच इज बोथ 1-1 एज वेल एज 1-2. 1-1 रिलेशन हम एस्टाब्लिश कर दे पारले बिटवीन ए एंड बी. देयरफॉर ए इज इक्विवेलेंट टू बी. ए इज इक्विवेलेंट टू बी. नाउ बिटवीन ए एंड सी, देखो बिटवीन ए एंड सी, लेट g be a function from a to c and g of x is equal to, देखो ये सब odd number 1 3 5 7 ये सब odd number. तो 2x minus 1 odd numbers are in the form of 2x minus 1 when they are starting from 1. तो जब x को 1 लिखिए, x को जब 1 लिखिए हमको 1 आसला. देखो g of 1 is equal to 1, g of 2 equal to 2 into 2 4 minus 1 will be 3, and g of 3 equal to 6 minus 1 5. एमती सब आपसी c of c. G of 4 equal to 8 minus 1 will be 7, and so on, and so on. So G is a, so there is a correspondence between A to C. Therefore, A is equivalent to C. So this is equation 1. This is equation 2. Now 1 4 9 16. देखो A का सब एलिमेंट जो स्क्वायर करेंगे ठीक है. Let h of x is equal to, let h of x is equal to x comma y. H of x is a function ना. H of x is a function which is equal to x square, which is equal to x square, equal to x square, where x belongs to the set A. ठीक है. तो where 8 भी लिख देगा, where x belongs to A. तो h of 1 कितने गला 1, which are element of D. h of 2 equal to 2 square is 4, h of 3, so 3 square is 9. So we are able to obtain a 1-1 correspondence. So g of x is equal to x square from natural number to natural number is a bijective one. Is a bijective one. All the functions are bijective. This is bijective. This is bijective. This is bijective. Therefore, a set is equivalent to D. So from 1, 2, 3, and 4. From 1, 2, and 3. 3. This is not 4. So from 1, 2 and 3, A is equivalent to B, equivalent to C, and equivalent to C. Therefore, they all are equivalent. So f equal to 1 comma A. F कौन दिया है? F is equal to 1 comma A, 2 comma B, 3 comma C. This is given, 4 comma D. And G is equal to A comma X, B comma X, C comma Y, and D comma X. These are F and G. Determine G O F and F O G. Let us first find G O F of X. G O F of X equal to G of F of X. This is what the definition of composition function is. Now G O F of X माने F so function टा प्रथम ऑपरेट हो. तो g of f of x, f of x देखो a अच्छी फर्स्ट है, f र आउटपुट अच्छी a. तो g of f of a equal to g of f of a is f में 1 पुट कर लेना.
g of f of 1, g of f of 1, and f of 1 is equal to a, g of a, and g of a is equal to x, g of a equal to x. Similarly, g of f of 2, g of f of 2 equal to g of f of 2, f of 2 is equal to b, f of 2 equal to b, and g of b is equal to again x. Now g of f of 3, now f of 3 is equal to c, g of c, and g of c equal to y, and g of f of 4 equal to, f of 4 is g of d, and g of d is equal to x, g of d equal to x. So this is how GOF is defined. GOF equal to, GOF of x is equal to, when you put x is equal to 1, what you are getting? X. When you put x equal to 2, again you are getting x. When you give x equal to 3, you are getting y, and when you are using x equal to 4, you are getting x. This is how it should be written. अब जदि डायरेक्ट करिवो केमति देखो आंसर तो जाना पड़िगला 1 g o f of x माने प्रथम कोन ऑपरेट हो f ऑपरेट हो f को ऑपरेट करियो चेष्टा करियो f टा को जतक ऑपरेट करिवे कोन देखो f को ऑपरेट करछन 1 goes to a and a goes to x, therefore 1 goes to x, 2 goes to b, b goes to x, therefore 2 goes to x, 3 goes to c, c goes to y, therefore 3 goes to y, 4 goes to d, d goes to 4, therefore 4 goes to x. Okay? GOF defined. How medical? Now FOG. FOG of x is equal to f of g of x. आगे g ऑपरेट करेगा, ठीक है? Now FOG of एटा g टा g रे a पुट करेगा. FOG of x is equal to x रे जगह रे a नहीं दिया, ठीक है? x जगह a नहीं दिया. जीरो एलिमेंट गुड़ा को अप्लाई करेगा a equal to f of g of a. Now what is g of a? G of a equal to x, and f of x is nothing, not defined. f of x देखो, f for x नहीं, f for a x तो 2 महीने का नहीं ना, तो कौन वैल्यू मिलेगा? This is not defined, so we cannot find FOG of x since it is not defined. Since it is not defined. बुझिएगा 8 simple thing. Now let f equal to this g equal to determine GO and FOG if possible. Test whether FOG equal to GOF or not. Given what is given, f is a function. The elements are 1, 3, 2, 4, 3, 7, and g is a function which is 3, 2, and 4, 3, and 7, 1. Okay. Now first we will find the value of FOG. First we will find FOG of x is equal to f of g of x. So first FOG of 3 ना, so this is equal to f of g of 3, but g of 3 कितना? G of 3 equal to 2, so this becomes f of 2, and f of 2 equal to how much? 4. Now FOG of 4 apply करिए. When you apply 4, this is f of g of 4, and what about g of 4? G of 4 is not there. G of 4 equal to 3. So f of is there na? G of 4 is 3. F of 3, and what is f of 3? F of 3 will be equal to 7. This is equal to 7. Now FOG of 7. FOG of 7. So this is equal to f of g of 7. G of 7 is equal to 1. So f of 1 and f of 1 equal to 3. F of 1 equal to 3. So how do you define FOG now? So FOG is FOG of x is equal to, when you are applying 3, you are getting 4. So first element will be 3, 4.
Now when you apply 4, you are getting 7. So this will be the second element, 4 comma 7. And when you apply 7, you are getting 3. So this will be 7 comma 3. This is FOC. This is FOC. Now what about GOF? GOF of x is equal to एटी करबा पुणी लिखा देखो GOF of x is equal to G of f of x. G of f of x. Now apply f of x. GOF of 1 equal to G of f of 1. And what is f of 1? F of 1 equal to 3. So G of 3 and G of 3 equal to 2. G of 3 equal to 2. Now GOF of 2. This is equal to G of f of 2 and f of 2 equal to 4. So G of 4 and G of 4 equal to 3. Then GOF of 3. Means G of f of 3 and f of 3 equal to 7. So G of 7 and G of 7 is equal to 1. G of 7 equal to 1. Okay. So what about GOF? When you apply 1, you are getting 2. So this is 1 comma 2. This is 1 comma 2. Now 2 comma 3, 2 comma 3 and 3 comma 1. 3 comma 1. So f of G, GOF both exist but they are not equal. Both exist but FOG is not equal to GOF. They both exist but they are not equal. ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 पर्यंत आम वीडियो कंप्लीट कर सारी. नाउ नेक्स्ट वीडियो जो आमर आछो क्वेश्चन नंबर 10 to 16 17 जोटा रिमेनिंग एक्सरसाइज अछि ता ऊपर हम वीडियो तैयारी करी. ठीक अछि आ पढुता आ जदि मो चैनल रो नुवा अछि मो वीडियो जदि आपन को हेल्पफुल होछि तो मो चैनल को सब्सक्राइब कर दे. मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ शेयर करिवे. शेयर और लाइक करिवे. सब वीडियो शेयर करी एथि पई जे ओई वीडियोटा बहुत लोक को पहुंचो. राइट. Motivation motivation videos so that I will make more videos, JEE videos and OJEE videos for you also. Until then, bye.